Dear student, my fourth video on matrices, and now this topic is multiplication between two matrices, and after addition, uh, this is multiplication between two matrices. If capital A and capital B are two matrices, then AB is possible. That means multiplication between A and B is possible if number of columns of matrix A are equal to the number of rows of matrix B. I am repeating again because it is very important concept of multiplication. If number of columns of matrix A are equal to the number of rows of matrix B, then only the multiplication between them is possible. If multiplication is possible, then we say A is called prefactor matrix and B is called postfactor matrix. And if AB is possible, then we can say A is conformal to B also. If multiplication between two matrices is not possible, then we will say A is not conformal to B. Okay. Now suppose capital A is a matrix and capital B is a matrix. The order of matrix A is m by n and the order of matrix B is n by p. Now you can see the number of columns of matrix A are n and the number of rows of matrix B are also n. So the multiplication between A and B is possible, which is AB is equal to AB ij, and the order of new matrix is m by p. M is the number of row of matrix A and p is the number of columns of matrix B. And for example, I have taken two matrices, matrix A of 3 by 2 order and matrix B of 2 by 2 order. The elements of matrix A are A11, A12, A21, A22, A31, A32, and the elements of B are B11, B12, B21 and B22. And now we will check first of all the number of rows of matrix A are 2 and the number of number of rows of matrix A are 3, but the number of columns are 2, which are equal to the number of rows of matrix B. I repeating again, the number of columns of matrix A are 2 and the number of rows of matrix B are also 2. Both are equal, that's why the multiplication is possible. And how can we multiply these elements? So first of all, we will take the R1 of matrix A and we will multiply it with C1 of B. हम मैट्रिक्स A के R1 के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B के सारे एलिमेंट के साथ करते हैं. उन्हें लिख देते हैं कहाँ पर, चूंकि हम R1 का मल्टीप्लाई C1 में कर रहे हैं तो R1 C1 1 1, सो द पोजीशन इज 1 1 1 1. ये एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम में लिखा जाएगा. फिर हम R1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे मैट्रिक्स B के 1 2, मतलब पहले रो और दूसरे कॉलम में आ जाएगा. फिर मैट्रिक्स B में क्या होगा, दूसरे रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई का हम दूसरे कॉलम में करेंगे. ऐसे ही तीसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर तीसरे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे. आप देख सकते हैं इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया है. आप मैट्रिक्स ए और बी जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके मैंने लिखा है उनको आप देख सकते हैं. इनके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं और इसके मैट्रिक्स बी के एलिमेंट 1 7 5 9 है. आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देख सकते हैं 3 by 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देख सकते हैं 2 by 2. द नंबर ऑफ रोज the number of columns of matrix A are 2, the number of rows of matrix B are 2, both are equal, so we will multiply. अब मल्टीप्लाई को ध्यान से देखेंगे तो आप मल्टीप्लाई सीख जाएंगे. अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. समटाइम ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड समटाइम यू विल फाइंड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड ही करते हैं. कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते. मतलब हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि ऑलवेज नहीं करते हैं. ठीक है, समटाइम ये करते हैं और कभी कभी नहीं करते. आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था. तो मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई तभी करता है अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab if ab is equal to b, and a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab if only if ab is equal to ba. Sometime you will find question on this topic. There are two matrices are given a and b and you have to check it is correct, it satisfies the given identity or not. So we will not find a square b square ab, we will check only ab and ba. Ab is equal to ba, then we will say yes. If AB is not equal to BA, we will say no. Again, A plus B into A minus B is equal to A square minus B square if AB is equal to BA. Now the next associative property, हाँ ये associative property को hold करते हैं. If A and B and C are three matrices and they are satisfying the condition of multiplication, then we can say property matrices satisfy the associative property. Now existence of multiplicative identity.
For every element, I is a unit matrix is called a multiplicative identity. So we can write AI is equal to A and IA is equal to also A. यहाँ ये commutative property दोनों matrix से satisfy करेंगी A और I. Existence of inverse A into A inverse is equal to I and A inverse into A. जब हम A का मल्टीप्लाई A इनवर्स के साथ करेंगे तो हमेशा I आएगा. A इनवर्स एक मैट्रिक्स होती है, इसे हम फाइंड कैसे करते हैं हम आगे पढ़ाएंगे आपको, और हमें हमेशा I मिलेगा. ठीक है, I एक यूनिट मैट्रिक्स है, आप जानते हैं. ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी, AI इज इक्वल टू A IA एंड A इंटू A इनवर्स I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम इनको बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.